Hello everyone. In our previous session, we have talked about the rules of addition and subtraction of integer. Even we have also talked about how to plot the integers on number line. It's very easy. Now we will start with exercise 1.1. In that, you have given one number line and 5, 10, 15, 20, 25, 0, -5, -10 such numbers are given. On that you have indicated some points and on which there are the names of places written. For example, Lahul Spiti, Srinagar, Shimla, Uti, Bengaluru and so on. ठीक है? On the base of these number line you have to answer the questions given below it. So first question is, observe the number line and write the temperature of marked places in above number line. I have already written the numbers, rest of numbers, or I have already filled up the remaining numbers which were not plotted on the number line. See, it's 5 to 10. गैप कितना है? 5 से 10 का गैप है, मतलब बीच में कितने आएंगे? 4 integers will be there. So these integers will be, as it is towards the positive side, it will be plus 6, 7, 8, 9, then 10, 11, 12, 13, 14, then 15, 16, 17, 18, this is 19 and 20, 21, 22, 23, 24 and 25. When you will draw the number line in your notebook, I want all the integers on equal distance, because the number line shows the numbers which are equidistant from each other. This thing always keep in mind. Clear? Then moving towards the left side, negative integers. Here is 0, here is -5. So of course -1, -2, -3 and -4 and so on. ठीक है? Now, so arrow is here from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8th line. So this is -8. This temperature of Lahul Spiti is -8. आपको places का नाम लिखना है, उसके आगे arrow करके उनका temperature लिखना है. That of Srinagar is -2, Shimla is 5 itself, 5 degrees Celsius, Uti 14 and Bengaluru 22 degree Celsius. Clear? यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं. You have to write the answers in detail. Then, what is the temperature difference between the hottest and coldest place among above? Hottest place, सबसे ज़्यादा temperature किसका है? बेंगलुरु का. How much it is? 22 degree Celsius. Minus, सबसे कम temperature किसका है? लाहौल स्पीति का. How much that is? -8. So 22 degree Celsius into bracket -8 degree Celsius. Minus into minus, that become plus. So that will give you 22 degree Celsius plus 8 degree Celsius. That is the 30 degree Celsius. So hottest और coldest place के बीच में temperature difference क्या है? 30 degree Celsius. कैसे? सबसे hottest place कौन सी है? बेंगलुरु. How much it is? 22. और ये कितना है? लाहौल स्पीति -8. 22 -8 मत करना क्योंकि ये -8 है. So 22 minus -8, minus gets converted into plus. So 22 plus 8, that gives you 30 degree Celsius. Understand? Okay. What is the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar? See, -2. श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8. So what is the temperature difference? मतलब यहाँ पे भी आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है. -2 minus -8 degree Celsius. Okay. So that will become -2 degree Celsius. Again minus into minus plus 8 degree Celsius. That will give you -2 plus 8 means plus 6 degree Celsius. दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? Even you can count here also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है? 6 डिग्री. ठीक है? यहाँ पे आपको प्लस 6 डिग्री आ रहा है, -6 डिग्री आ रहा है. That you don't have to mention over there. Just find out how much difference is there, how many degrees difference is there, and that is 6 degrees Celsius. Now, next question D. Can we say that the temperature of Srinagar and
and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla. Okay, to solve this I will rough these questions. I hope you all have written. नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पॉज करके ये लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का यू कैन राइट दैट इज नॉट अ बिग डील. Okay, what is the question? Can we say that the temperature of Srinagar and Shimla taken together, मतलब क्या addition? What is the temperature of Shimla? कहाँ गई Shimla? 5 डिग्री सेल्सियस. 5 डिग्री सेल्सियस प्लस और कौन श्रीनगर, कितना है श्रीनगर का? -2 डिग्री सेल्सियस. What is the answer? Plus minus minus 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस that will give you 3 डिग्री सेल्सियस. चलो टेकन टुगेदर का आंसर तो आ गया. आगे क्या कह रहे हैं? इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला. 3 डिग्री सेल्सियस. इज 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द शिमला दैट इज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस. सो यस, द टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर इज लेस देन दैट ऑफ शिमला, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस और इन दोनों की सम आ रही है, एडिशन आ रही है 3 डिग्री सेल्सियस. सो वी कैन से यस. यस के बाद आपको पूरा सेंटेंस कंटिन्यू करना है आपको इन द फॉर्म ऑफ आंसर. नेक्स्ट पार्ट, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर. श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? -2. तो आप एक यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस. बीच में एक ब्रैकेट लिखो. ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन का. -2 डिग्री सेल्सियस एंड 3 डिग्री सेल्सियस जो हमारा आंसर आया है. सो -2 and +3 which is greater? Of course positive number is greater. So it is also less than that of Srinagar. No, it is not less than of Srinagar. It is greater because श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो निगेटिव टेम्परेचर है, माइनस में है, और ये जो हमारा आंसर है दैट इज इन पॉजिटिव. सो पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर. सो नो, इट इज नॉट लाइक दैट. द टेम्परेचर of these two taken together is not less than that of Srinagar. It is greater. ठीक है? Is it clear up to this question? Write it down.